गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायाम् अथ पंचविंशोऽध्याय। रामोवाच। एकदा हि पुरा देवी शम्भुपरं सूतिकृत विश्वकर्माणमाहूय स्वलोके परतापरे तेन स्वधेनुशालायां कारयामास विस्तृतं रम्यं च भवनं सम्यक् तत्र सिंहासनं वरं तत्र छत्रं महादिव्यं सर्वदादुत्तमं कार्यमास विघ्नार्थ शङ्करो विश्वकर्मणा शुक्रादीना जुहावाशु समस्तान् देवतागणान् सिद्धगन्धर्वनागादीनुपदेशाक्षं कृत्स्नशा देवान् सर्वनाग्माक्षं विद्धि पुत्रान् मुनीनपि देवी सर्वा अप्सरोभिर्नानावस्तु समन्विता देवाना च तच्छीर्णां सिद्ध्वाना फणीनामपि आनयन् मङ्गलकारा करा कन्या षोडश वीणामृदङ्गप्रमुख वाद्यानाना विधान्मुने उत्सवं कारयामास वादयित्वा सुगायने राजाभिषेकयोग्यानि द्रव्याणि सकलौषधे प्रत्यक्षतीरत्पाथोभिः पञ्चकुम्भाक्षं पूरितान् तथान्यासंविधा दिव्या आनयत् स्वगणैस्तदा ब्रह्मघोषं महारावं कारयामास शङ्करा अथोऽभ्यरिं समाहूय वैकुण्ठात् प्रीतमानसा तदक्त्या पूरनया देवी मोदते स्म महेश्वरा समूहते महादेवस्तत्र सिंहासने वरे उपवेश हरिं कृत्या भूषयामास सर्वशा आबुद्वरम्यमुक्कटं कृत्कौतुकं मङ्गलम् अभिषचन् महेशस्तु स्वयं ब्रह्माण्डमण्डपे दत्त्वानिखिलेक्षर्ययनेजं नान्यगामियत् ततस्तुष्टाव त्वं शम्भुः स्वतन्त्रो भगवत्सला ब्रहामन् लोककर्तारं वोचत्वचन् कृतमव्यापयन्यस्मवराधानं स्वतन्त्रो भगवत्सला महेशुवाच अथा प्रभृति लोकेश मणिदेशादयं हरि मम बन्ध स्वयं विष्णुर्जात सर्व शृणोति हि सर्वदेवादिभिस्तात प्रणम्रत्वममु हरिं वर्णयन्तु हरिं वेदा ममैते मामी वाग्यया रामवाच इत्युक्त्वाथ स्वयं रुद्रो नमते गरुडध्वजम् विष्णुभक्तिप्रसन्नात्मा वर्तभक्तवत्सला ततो ब्रह्मादिभिर्देवैः सर्वरूपसुरैस्तथा मुनिसिद्ध्वादिभिक्षैव वन्दितो भूधरीस्तदा ततो महेशो हर्ये शंसदि विश्वदापुरं महावरान् सुप्रसन्नो दत्तवान् भगवत्सला महेशुवाच त्वं कर्ता सर्वलोकानां हर्ता हर्ता मदाज्ञया दाता धर्मार्थकामानां शास्ता दुर्नयकारिणां जगदीशो जगत्पूज्यो महाबलपराक्रम अजेयस्त्वं रणे क्वापि ममापि हि भविष्यसि शक्तित्रयं गृहान् त्वमिच्छादिप्रापितं मया नानालीलाप्रभावत्वं स्वतन्त्रं भवत्रय त्वद्वेष्टारो हरिणुन मया शास्य प्रयत्नता त्वक्ताना मया विष्णु धियं निर्वाणमुत्तमं मायां चापि गृहान् हेमा दुष्प्रनोद्यां सुरादिभिः यया सम्मोहिता हितं विश्वं चिद्रूपं भविष्यति मम बाहुर्मध्ये यसत्वं दक्षिणोऽसौ विधिर्हरे अस्यापि न विधिपाता जनितापि भविष्यसि हृदयं मम यो रुद्र स एवाहुन्न संशया
पूज्यस्त्व सदा सोऽपि ब्रह्मादीनामपि ध्रुवम् अत्र स्थित्वा जगत्सर्वं पाल्यत्वं विशेषता नानावतार भेदैक्ष सदा नानोति कृत्तभीमं लोके तदेवं वै स्थानं च परं धर्मत गोलोक इति विख्यातं भविष्यति महोज्ज्वलम् भविष्यन्ति हरे ये ते अवतारा भुवि रक्षका मक्तास्तान् ध्रुवं प्रीता पश्यन्ति स्म निजाद्वरात् रामुवाच अखण्डैश्वर्यमासाद्य हरेरित्थं हरं स्वयं कैलासे सज्ञस्तस्मन् स्वैरं क्रीडत्युमापति तदा प्रभति लक्ष्मीशो गोपवेशो भवत्तथा अयासि तत्र सुप्रीत्या गोपगोपी गवाम्पति सोऽपि विष्णुप्रसन्नात्मा जगोपनिखिलं जगत् नाना अवतार संधर्ता वनकर्ता शिवाज्ञया इदानीं स चतुर्धात्रा अवतारच्छङ्कराज्ञया रामोऽहं तत्र भर्तो लक्ष्मणा शत्रुहेति च अथ पित्राज्ञया देवी ससीता लक्ष्मणा सती आगतोऽहं वने चाद्य दुःखितो दैवतो भवम् निशाचरेण मे जाया हृतासीतेति केनचित् अन्वेष्यामि प्रियां चात्र विरही बन्धुना वने दर्शनं ते यदि प्राप्तं सर्वथा कुशलं मम भविष्यति न सन्देहो मातस्ते कृपया सती सीताप्राप्ति वरं देवी भविष्यति न संशया त्वं हत्वा दुःखदं पापं राक्षसं त्वदनुग्रहात् महादाज्ञं ममाद्यैव यद्यक्राष्टा कृपायुवाम् यस्मिन् सकृन्नो स्यातां स धन्या पुरुषो वरा इत्तत् मा भाष्य बहुधा सुप्रणम्य सतीं शिवां तदाज्ञावने तस्मिन् विचार रघुध्रुव अथाकर्ण्य सती वाक्यं रामस्य प्रयातमना हृष्टा सा प्रशंसन्तं शिवभक्तिरतं हृदि समृत्वा स्वकर्म मनसा आकाशी छोकं सुविस्तरं प्रत्यगच्छ दुदासीना विवर्णा शिवसन्निधौ पथि सा चिन्तयद्देवी सचलन्ती पुनः पुनः नागीकृतं शिवोक्तं मे रामं प्रति कुधीकृता किमुत्तरमहं दास्य गत्वा शङ्करसन्निधौ इति सञ्चित्य बहुधा पश्चात्तापो भवत्तदा गत्वा शम्भुसमीपं च प्रणाम शिवं हृदा विष्णुवन्दना शोकव्याकुला विगतप्रभा अथतां दुःखितां दृष्ट्वा प्रपच्छ कुशलं हरा प्रोवाच वचनं प्रीत्या तत्प्रीक्षा कृता कृतं श्रुत्वा शिववचो नाहं किमपि प्रन्तानना सती शोकविष्णुना सा तस्थतो तत्र समीपता अथ ध्यात्वा महेशस्तु बुबोध चरितं हृदा दक्षजाया महायोगी नानालीलाविशारदा सस्मार स्वपनं पूर्वं यत्कृतं हरिकोपता तत्प्रथितोऽथ रुद्रोऽसौ मर्यादा प्रतिपालका विषादो भूतप्रभो सत्र मनस्य येवमुवाचः धर्मवक्ता धर्मकर्ता धर्मवान् सदा शिववाच कुर्या चेद्यक्षजायां हि स्नेहं पूर्वं यथा महान् नश्ययेन मम पर्णाशदो लोकलीलानुसारिणे न ब्रह्मोवाच इत्थं विचार्य बहुधा हृदा सतीमपनं न नाशयामास वेदधर्मप्रपालका ततो विहाय मनसा सतीतां परमेश्वर जगाम स्वगिरं भेदं जगाविद्वा स हि प्रभु चलतं पथे तं व्योमवानयुवाच महेश्वरं सर्वान् संशयाव्यं
तत्र दक्षजां च विशेषता व्योमवान्युवाच धन्यसत्त्वं परमेशान त्वत्समोद्य तथापना न कोपयन्न स्त्रीलोके अस्मिन् महायोगी महाप्रभु ब्रह्मवाच श्रुत्वा व्योमवचो देवी शिवं प्रपच्छ विप्रभा कम्पनं कृत्वा नाथ ब्रूहि मे परमेश्वरा इति पृष्टोऽपि गिरीशा सत्याहितकर प्रभु नोद्वाहं स्वं पन्न तस्य यद्यग्रे करोत्पुरा तदा सती शिवं ध्यात्वा स्वपतिं प्राणवल्लभं सर्वमं बुबोधेतुं तं प्रियत्यागमयं मुने ततोऽतीव शुशोचाशु बुद्धवा सा त्यागमात्मना शम्भुना दक्षजा तस्मानि क्षसन्ति मुहुर्मुहुः शिवस्तस्या समाज्ञाय गुप्तं चक्रे मनोभवं सत्येपनं सवकियं हि कथां ब्रहि वर्धन प्रभु सत्यप्राप स कैलासं कथयन् विविधा कथा वरे स्थित्वा निजं रूपा दधो योगी समाधिभृत तत्र तस्थो सती धामिन् महाव्याकुलमानसानन बुबोधचरित्रं तत्कश्चित् शिव्योर्मुने महान् कालो व्यतीयाय तयोरित्थं महामुने स्वोपातदेहयो प्रभुः लोकलीलानुसारिणो ध्यानं तत्याज गिरीशस्तत् स परमोऽतिकृता तद्ज्ञात्वा जगदम्बा हि सती तत्रा जगाम सा ननामाथ शिवं देवी हृदयेन विधूयता आसनं दत्त्वान् शम्भुः स्वस्मुख उदारधि कथायामास सुकृत्या कथा बहिर्मनोरमा निशोकां कृत्वान् सद्यो लीलां कृत्वा च तादृशीं पूर्ववत्सा सुखं लेभे तत्याज स्वप्नं न सा नीत्याक्षरशिवे तात मन्तव्यं परमेश्वरे इत्थं शिवाशिव कथां वदन्ति मुनयो मुने किल केचित् विदांसो वियोगक्ष कथं ययो शिवाशिवचरित्रं को जानाति परमार्थता स्वेच्छया क्रीडतस्तो हि चरितं कुरुता सदा वागथार्विः सम्पृक्तो सदा खलु सती शिवो तयोर्वियोगसम्भाव्य सम्भवेच्छया तयो इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे सतीवियोगवर्णनं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः।